गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी ए स्वरूप घोष फ्रॉम स्टॉक शो डेक। हम काफ़ी दिन बाद आया है। ये इसकी रीज़न है कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है एंड वी आर इनटू ए फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, जहाँ की आपकी प्राइस एक्शंस एंड एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिकली विजिबल ऑन द चार्ट। तो आज की तारीख में क्या है कि ट्रेडिंग व्यू के साथ काफ़ी सारा एक्सचेंज की डायरेक्ट इंटर रिलेशनशिप हो रहा है। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हम ट्रेडिंग करेंगे ये विजुअल चार्ट के लिए, तो आपका दिक्कत ना है। सो लेट्स एनालाइज निफ्टी and bank nifty in a very short manner, and I'll also show you some kind of very advanced thing which पहले हमने दिखाया नहीं कभी, so वो अभी प्लेटफॉर्म में आ गया है। एंड इसके साथ हम लोगों का ये जो गैन शीट है, गैन शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शीट, जहाँ आपको जो ट्रेडर्स इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है कि कितनी कौन टाइम में स्टॉक की चेंज होगी। एंड दिस एंटायर शीट इज कॉपीराइटेड, फार्मूला इज कॉपीराइटेड, सो अनऑथराइज्ड यूज विल हैव लीगल इश्यूज। तो चलते हैं ये देखने के लिए कि निफ्टी क्या होता है, एंड इसके साथ साथ हम ऑटोमेटिक सिस्टम भी दिखाएंगे क्या हम लोग इतना दिन में बनाया। इट इज़ प्योरली मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन गैन। सो आपको जानकारी नहीं चाहिए कि गैन क्या बोल के आया है, दिस आर ऑल फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये चार्ट देख के लगता है कि निफ्टी इज एक्चुअली इज नेगेटिव, bearish. So let's do one thing. Let's switch on one of our model. See, for example, if I switch on this model, ये हमको देता क्या है, ये चीज क्या है, ये क्या देता है, हम ट्रेड कैसे करेगा। वी आर ऑन ए डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। अब देखिए ये हम लोगों का डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट हम यूज़ करेंगे एंड और एक बार 1 आवर चार्ट भी दिखा देंगे, सो देयरफॉर आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग फास्ट, ऊपर में आता है आपका मोमेंटम क्या है, ये RSI का स्पीड है, ये मंथली 56 57 एंड राइजिंग, ग्रीन इज राइजिंग। डेली में आपकी सन जो बोलता है हम, तो 53 डेली में ट्रेंड साइडवेज है एंड वीकली साइडवेज है, एंड मंथली 56। सो मंथली सिंस these three आर राइजिंग, तो ट्रेंड थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग बियरिश और बुलिश बोलकर करता नहीं है, because we only look at levels. These levels are actually scientific levels. स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, स्टॉक नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। एंड we have also some couple of solar kind of system mathematical levels which actually guides you even in intraday and for long trading. So आप apparently इसको कैसे ट्रेड करेगा दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये कोबरा लाइन हम लोगों का फेमस कोबरा लाइन। आदमी लोग क्या है इसमें, पीपल मेक्स ए मिस्टेक दैट दिस इज ए 20 SMA लाइन, इट इज़ नॉट ए 20 SMA लाइन। सो ये कोबरा लाइन जो है, कोबरा लाइन की स्टॉक कहाँ है, कोबरा लाइन की जस्ट ऊपर क्रॉस किया फर्स्ट। सेकेंड, ये जो है ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, बट नेगेटिव होगा तो जिंदगी भर नेगेटिव नहीं होगा। सो देयर विल बी यहाँ रिवर्सल करने का कोशिश किया है, यहाँ रिवर्सल करने का कोशिश किया है, यहाँ भी रिवर्सल होने का कोशिश जारी है। अब देखिए फर्स्ट सिग्नल क्या है, ये रेड क्रॉस, मीनिंग जो आदमी ऊपर में सेल किया था उन लोग कृपा करके इधर प्रॉफिट बुक करके निकाल जाइए। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप देखिए ये जो वाला गैप है, दीज आर द गैप्स, ये गैप अभी तक फुलफिल नहीं है, तो निफ्टी माइट फेस द गैप रेजिस्टेंस। तो मेरा इमीडिएट जो है सपोर्ट कहाँ से लेंगे, 17,199 ये सपोर्ट ले लिया। अब देखिए ये ऑटोमेटिक स्टार्ट ड्राइंग लाइन, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ जाके सपोर्ट लिया है एंड देन इट गिव्स ए ब्यूटिफुल रन। नाउ नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है, मेरा बिग स्टॉप है 17,559। 17,559 वुड बी इस जगह पे ऑलमोस्ट, एंड इवेंचुअली आप देखोगे दीज आर द
क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? दिस इज माय बुल ट्रैप लाइन। तो ये जा रहा है, इट इज गिविंग ए बुल रन, सो देयरफॉर दिस जोन इज ए trap zone. Okay, so these are all things we ये जो है हम सिखाता है separately, and the drawing how इसको कैसे आता है, how it is calculated. And this particular line, this green line, if you see, first of all, this 17424 is a price time squaring line. Price time squaring line. आप देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब नंबर, प्राइम नंबर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्यों है? गैन बोल के गया है कि प्राइस एंड प्राइस एंड टाइम स्क्वायर्स. सो दिस इज 132 स्क्वायर नंबर. ओके, नाउ एंड ऑल्सो इस जगह पे क्या है, मेरा OHLC लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइन है. सो जस्ट OHLC लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइन ये क्रॉस जस्ट किया है. सो इफ इट सस्टेंस तो निफ्टी कहाँ जाएंगे? फर्स्ट सपोर्ट आपका अगर, देन ये देखिए छोटा छोटा हमारा गैप है, ये जो गैप पहले हमको क्रॉस करना है, दैट मीन्स 1769 क्रॉस कर जाएगा तो 17885. वी ऑल गिव रियलिस्टिक टारगेट एंड दीज आर ऑक्टेव लाइन्स. दिस इज अनदर लाइन. सो जितना आपका नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली वो जो गैप एंड अदर थिंग्स ऑटोमेटिकली दैट वुड बिकम ए रेजिस्टेंस. अच्छा, ये करंट रे में क्या होता है, हम डबल क्लिक करेंगे तो इधर मेरा ये में RSI भी आ जाएंगे. ये इंट्राडे के लिए. इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में देखिए सब कुछ हमने डेली क्या बोला, दैट डेली में 53 है, दैट इज डेली राइजिंग. इससे हमको क्या लेना है? सिंपल स्टेटमेंट. ये मेरा ऑल थ्री सन, आवरली एंड डेली, दैट इज माय करंट टाइम फ्रेम, and hourly time frame is also 72, it is rising. So entire scenario is rising. Nifty has actually now going up, and ये मेरा क्या सिग्नल है, ये ब्लू सिग्नल है, एंड दिस इज बेसिकली ये लाइन कौन सा लाइन के सामने आया है हमारा, ये गैन की एक ऑटो कैलकुलेटेड सपोर्ट लाइन है जहां हमको सिग्नल दिया है. सेकेंड थिंग है, इधर नेक्स्ट सिग्नल हमको दिया है, भाई साहब सेल एग्जिट कर लो. once I get these two signals, I also I can take next day, if the high of this candle crosses, I can take a very small options. But हमारा पास और प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्रॉब्लम जो है, now I will switch on another things. ये क्या है, लाइन कुछ भी नहीं है, this is basically the gap. Now ये gap always works as a resistance, and also these are all calculated Shemitah lines. इसमें इसकी बारे में जानना है तो आप गूगल में जाके देख लीजिएगा. So these are all very astronomical lines. Okay, very very important lines. So ये इसमें खाली ये कोबरा लाइन के ऊपर जाएंगे और इमीडिएटली हम बाई करेंगे, एंड बाई विथ स्टॉप लॉस, एंड हम देखेंगे कि सामने मेरा क्या रेजिस्टेंस है, ऑटो सब कैलकुलेटेड हो जाएगा. चलिए अभी और एक चीज दिखाता है आपको. लेट्स मूव टू बिफोर आई स्विच ऑन, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. नाउ ये मेरा बैंक निफ्टी की चार्ट है. बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी देखिए, इट इज अ गैप अप ओपनिंग. ये जो ग्रीन कलर जो है ना, ये देखिए गैप का कलर है. सो ये गैप वर्क्स एज ए वेरी गुड सपोर्ट. और क्या चीज है, हम देख रहे हैं कि प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग है क्या नहीं. यस, 40,804, बैंक निफ्टी 40,833 किया है. सो देयरफॉर इट हैज आल्सो क्लोज्ड अबव प्राइस टाइम स्क्वायर. इट हैज आल्सो गॉट ए सिग्नल हियर, इट इज आल्सो राइजिंग. सो ये 59 है, इसकी मतलब है RSI का एक रेजिस्टेंस आने वाला है. ओके, नाउ दिस इज द नेक लाइन ऑफ हेड एंड शोल्डर में हम लोग जो लॉन्ग टर्म हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया है, तो उसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑल्सो साइड एंगल मेरा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जस्ट क्रॉस किया है. इसकी मतलब है नेक लाइन जब क्रॉस करेगा, देन द डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड द लाइन वुड बी आवर टारगेट. सो दैट मीन्स this distance, if you mount it on here you will get the upper target. Okay, so this is the bank nifty, and here we are not discussing about ADX, because ADX is basically the मेरा जो पुराना जो पहले वाला ट्रेंड लाइन है, ये राधा ADX की जो पावर था वो न्यूट्रल हो गया. इसकी मतलब है डाउन ट्रेंड न्यूट्रल हो गया है. Okay, and then it is it might be a beginning of uptrend. Okay,
Now let's go to a stock, let's say Tata Steel. Tata Steel. Now if we go to Tata Steel, you know, we have let me okay, Tata Steel, let me close close these things, and Tata Steel, let's say I will switch on another things. कहाँ कहाँ कब कब टाटा स्टील चेंज होगा, दिस इज अनदर काइंड ऑफ गाइडेंस वेयर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा काम क्या है, हम सीधा इसको इनपुट करेंगे क्या क्या हिस्ट्री साइज है. तो वी हैव रूल्स टू सेट. बेसिकली वी टेक हाई एंड लो ऑफ ए पर्टिकुलर डे एंड देन वी अप्लाई पिथागोरस थ्योरम. टाइम थ्योरम मैंने पिथागोरस हम लोग को सिखाया था इन क्लास 6-7, जहाँ हम लोग सिखाया था कि पिथागोरस की जो हाइपोटेन्यूज है उसी हिसाब से आपका एरिया कैलकुलेट होता है. सो दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टॉक मार्केट. सो ये जो लाइंस जो है ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेटेड है. ओके, नाउ ये लेवल कैसे कैलकुलेट होता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यह खाली आपको इस इंडिकेटर में जाके खाली ये डेट फिक्स करना है, डेट एंड द प्राइस हियर. Once you put the price, then automatically these lines will be calculated. These lines basically gives you the market turning points, and my starting point is here, and these two are the starting points, high and low, and based on that आप देखोगे it is how the turning points has affected the stock market. Now this is the day where you have a Pythagoras effect. So therefore you see a very big gap down. Now in this particular day of 9th of February is a big candle. Why? Because at the far level we have crossed 21, at the near level we have another it's a 21 days gap. So therefore it is completing one cycle. In this particular case, if you look at this is again near line of 9th of March. Now it is the 9th of March. If it is a holiday, it will be printing the holiday, so that next day or previous day of that you will have the effect. See, you have a almost interim top and such a big gap gap up. So these are all not happening coincidentally. It is all this is a solar day, so all the candles are actually impacting based on solar and Gantt calculations. On 24th of March, if you look at now, 24th of March is this one. That's such a big candle on 24th of March. Why? Because automatically the sign there is a calculation based on sin theta, cos theta, tan theta. So therefore this is a tan sin ratio. This is a tan sin ratio area where you will get a big move. Okay, then you have 28th March. So it is giving you actually a ratio, the time changing line, and then on that day you have to be very, very particular about trading. See, on 31st of March, if you look at 31st of March, you have a tan theta high. So therefore on 31st of March that there could be a big change like that. These are all automatically calculated. These lines are automatically spreaded, and then you have the solar price ratio, Pythagoras calculations. See, I will give you another example of Pythagoras. Just a minute. Now what we have to do is we have to go back to the history and look at the beauty. Now this, let's say hypotenuse is or time is 24. Now this is an indication. So from this high, if I take a 24 bar if I go back 24 bar, what will happen is it gives you 24 days. Yeah. Now it gives you a
a previous previous time, this 24 bar works beautifully. So therefore why this particular 24 calculation is important. If I go back, shift this 24 bar, you will see again, on 30th November exactly it started like that. Okay, so therefore you have to, once you shift it, automatically you will get the high and lows based on the time functions. Okay, so you keep on shifting and keep on shifting, you will get the maximum high and low. So therefore this is the beauty of the entire calculation, mathematical calculation, by which we can always predict the future, and in future how it will be impacting you in future. So these are the dates, all are known. These are the dates. Okay, so what you have to visually do is to see whether there is a gap or not, because here this gap, it might work as a resistance. So if I know this is a resistance and this is a trend line, I will be trading cautiously. Okay, so and if these dates are known, that these are the dates where sin theta, cos theta or solar will have a big impact, like this on 24th of March. See, this is 24th of March printed. And why it is spreading here? Because it is not fitting in the same same area of the chart, but it gives you that on 24th of March you will have a big movement. So therefore you have a big movement, and you got so big, so such a big movement. So this is the nutshell of our new new system. And in the new system, if you see, automatically solar levels also give you calculated figure that what is the very imminent resistance or support. Supposing it is at 104, you had a 101 at 101 level, you have imminent support. At 116, you will have a resistance. 116. And other than that, this actually helps you in lot of manner. So you can trade in options and other things, and you can switch off the lines if you want. I can switch off the lines. I don't need it every day, right? So therefore these are all automatic things. If you want to be a part of this entire family, do call me in my below mobile number 91430, and I'll be happy to help you out. Thank you very much. Take care. Bye bye.